Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to our online biology classes. I'm your teacher Sadia Saqib. Our today's topic is environmental resources and their depletion, and this is the last topic of the chapter number 25, Man and His Environment. इस चैप्टर में हम तकरीबन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं और अपने आज के टॉपिक में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द environmental resources and their depletion. What type of environmental resources are present in our surroundings and how they are going to deplete. किस तरह से ये ख़त्म हो रहे हैं रिसोर्सेज की, किस तरह से ओवर कंजम्पशन हो रही है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम अपने आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. Kinds of natural resources. What are the different kinds of natural resources present in the environment? Environment is a complex body of resources. It means there is variety of resources present in the environment. There are so many types of resources present in our surroundings, and these resources are necessary for the existence of the human beings. So not only the human beings, but other organisms as well, other animals, other plants, other living organisms, they are also dependent upon the environmental resources for their survival along with the human beings. There are two main types of resources. हम environmental resources को दो basic types में divide करते हैं. The first one is called as renewable resources. These resources are produced by natural systems that replace themselves quickly to keep pace with the consumptions. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो resources हैं जो जैसे जैसे consume होते जा रहे हैं ये साथ साथ replace होते जाते हैं. Right? These resources never come to an end. In simple words हम ये कह सकते हैं कि they never come to an end. ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि जैसे जैसे इनकी consumption हो रही है साथ साथ ये replace हो जाते हैं. So such type of resources, they are called as renewable resources, which can be renewed time to time. And the examples are air, water, land, wildlife, etc. So all these are the examples of renewable resources. They are constantly used and replaced by natural cycles. For example, water cycle, nitrogen cycle, oxygen and carbon cycle, और all these are also called as biogeochemical cycles, जिनके बारे में हम अपने पिछले टॉपिक्स में काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं. That is the circulation of the nutrients or circulation of the elements, circulation of the materials, circulation of these resources from living organisms into the back to the environment and from environment to the living organism in a cyclic manner. So that's why these renewable resources never come to an end, क्योंकि ये recycle होते रहते हैं. Second type of environmental resources which are present in our surroundings, these are called as non-renewable resources. As the name is indicating, they cannot be renewed. Once they are consumed, they cannot be renewed. एक दफ़ा ये जब consume हो जाते हैं, utilize हो जाते हैं, तो दोबारा से इनको renew नहीं किया जा सकता, इनको replace नहीं किया जा सकता. Once they are consumed, they end up, ये ख़त्म हो जाते हैं. They are the exhaustible resources. Exhaustible resources यानी जो exhaust हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, utilize हो जाते हैं और replace नहीं हो पाते हैं, which are once consumed cannot be replaced. Non-renewable resources formed at a much slower rate than their consumption. अगर इनकी जो formation का process है वो बहुत slow होता है as compared to their consumption, यानी जितना जल्दी ये consume हो रहे हैं comparatively उतना तेजी से इनकी replacement या formation नहीं हो रही है. So that's why they are called as non-renewable resources, and their examples are various metals, non-metallic minerals, coal, oil and natural gas etc. ये सब वो examples हैं हमारे resources की जो एक दफ़ा consume हो जाते हैं तो दोबारा renew नहीं हो सकते हैं. Then further हम environmental resources को दो categories में divide कर देते हैं, conventional and non-conventional energy resources. Now what is mean by conventional energy resources? The energy sources that has been used for ancient times is called as conventional energy sources, right? Energy produce करने के वो methods जो बहुत पुराने वक्तों से इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत पुरानी techniques use हो रही हैं और वो अभी तक in practice हैं, तो उनको हम conventional energy sources का नाम देते हैं. And their examples are fossil fuels, firewood, and sources of electricity are coal, oil, wood, peat and uranium, right? ये हमारे conventional energy sources हैं, यानी fossil fuels को हम use करते हैं, oil, gas, petroleum को हम use करते हैं energy produce करने के लिए, firewood को use करते हैं और electricity generate करने के लिए coal, oil, wood, peat और uranium को use करते हैं. तो all these are the examples of the conventional energy sources. Now what is the advantage of using the conventional energy sources? Advantage of using conventional energy sources is that they are not too much expensive.
and require established technologies that produce energy around the clock. तो पहला एडवांटेज तो ये है इनका कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, रादर दे आर चीपर और इजी टू प्रोड्यूस, इजी टू मेंटेन, इजी टू मैनेज। और दूसरा, इनमें इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे ऑलरेडी एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो चुका है और इन सिस्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से बेटर वे में ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन और इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ द एनर्जी अराउंड द क्लॉक, जिसमें गैप नहीं आता। देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट? क्योंकि नाउअडेज एनर्जी की डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि हमें विदाउट गैप एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो ऑल द टाइम एनर्जी शुड बी अवेलेबल टू परफॉर्म आवर वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस फंक्शंस। सो दैट्स व्हाई वी रिलाई ऑन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। हम इन पे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास ये एक सेट सिस्टम्स हैं जो हमें एनर्जी जनरेट करके प्रोवाइड कर रहे हैं। Then we have some disadvantages of the conventional energy sources. That is, they have a limited supply. For example, eventually the nuclear elements in fossil fuels will be used up. तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं या न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, उनको जब कंटिन्यूसली यूज किया जा रहा है और इतने लंबे अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि दे विल बी यूज्ड अप कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे और इनका रिप्लेसमेंट भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। इन एडिशन, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन एज वेल, और बर्निंग की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स ऑयल और गैस की वजह से जब इनकी बर्निंग होती है एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है, जो कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर रही है ह्यूमन बींग्स के लिए, और इसके अलावा इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। तो दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग these fossil fuels. Fossil fuels include coal, oil and gas, and they provide about 95% of the energy requirement of the human beings, and they are non-renewable. Again, they are non-renewable, it means that they cannot be renewed once used. एक दफ़ा इनको consume कर लें तो आप इसको दोबारा obtain नहीं कर सकते, आप इसे renew नहीं कर सकते, इसको reuse नहीं कर सकते, recycle नहीं कर सकते। They are called as fossil fuels as they are formed by remains of the plants and animals that lived million years ago. तो why they are called as fossil fuels? Fuel तो हम इसको इसलिए कह रहे हैं because it is a source of energy generation. But what is mean by fossil? Because they are formed by the remains of plants and animals that lived million years ago. आज से million years ago जो animals और plant species planet Earth पे exist कर रही थी, but due to certain sudden hazardous conditions like floods, like earthquakes, fires, etc., Earth की environmental conditions change हुई and these organisms died suddenly. और डेथ के बाद ये अर्थ की डीपर लेयर्स में जो है बरिड होते चले गए, और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट हुआ, तो उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से दीज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे वर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और अब हमें वर्ल्ड के वेरियस एरियाज में जब हमें ये फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं तो इनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी। Then nuclear energy, nowadays it's very important source of energy generation, and it is the energy obtained by the fission of the radioactive atom. Nuclear energy generation के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बात की थी। तो इसमें बेसिकली जो रिएक्शन फॉलो किया जाता है, दैट इज अ फिशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम. द एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स. द प्राइमरी न्यूक्लियर फ्यूल इज द यूरेनियम 235 विच इज अ रेडियोएक्टिव मटेरियल, लेकिन ये बेसिक फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए, एंड दैट हीट इज देन बेसिकली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द generators and turbines. What is the advantage of nuclear energy? Nuclear energy is that it emits large amount of energy. So by using very less amount of the fuel, nuclear fuel और यूरेनियम, बहुत कम यूरेनियम को यूज करते हुए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट की जा सकती है, तो ये इसका एडवांटेज है. एंड देयर इज ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस. द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट इट जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट मटीरियल्स विच कैन कॉज सीरियस health hazards for the human beings, or as well as various diseases. For example, cancer is a major cause. It is a disease which is caused by the when the person is exposed to the nuclear radiations or radioactive material. So that's why this is a disadvantage of the nuclear energy. Then second type of the energy sources, these are the non-conventional energy sources.
First of all, we discussed about the conventional energy sources, which are in use from the ancient times. Now we will discuss about the non-conventional energy sources. These are the unusual energy sources और न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट इन द कॉमन यूज और कॉमन प्रैक्टिस. यानी ये आप कह सकते हैं कि दीज आर द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिन पे अभी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है. ह्यूमंस आर ट्राइंग टू जनरेट एनर्जी बाय यूजिंग दीज सोर्सेज, बट दे आर नॉट इन द कॉमन यूज. अभी इनको कॉमनली यूज नहीं किया जा रहा बिकॉज दे आर नॉट एस्टैब्लिश्ड. इनको इनके सिस्टम्स को अभी तक प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं किया जा सका. सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. But humans, they are trying their best to generate energy by using these non-conventional energy sources. They are trying to set the trends of using these sources, but up till now they are not in common use. And examples are solar power, hydroelectric power, wind power, tidal power, ocean gradient power, geothermal power, ocean thermal power, biomass, biofuel from the plants, biogas. These are also called as renewable energy sources, as they can be renewed by time. They will never come to an end, but still human beings are working on them, trying to establish the systems regarding these non-conventional energy sources, but they are up till now not in the common use. What are the advantages of these sources? Advantages of these sources are that these are abundant in nature and pollution free and eco friendly, as these are the natural resources, and we said that they can be renewed. They never come to an end. So इनका एक एडवांटेज ये भी है कि इनको ये खत्म नहीं होंगे, ये डिप्लीट नहीं होंगे completely, and they are abundantly present in the nature. वाफिर मिकदार में मौजूद हैं. इनकी वजह से pollution नहीं होगी. They are pollution free and eco friendly. यानी ये हमारे लिए इको फ्रेंडली है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज द एडवांटेज, एंड दीज कैन बी रिन्यूड विद मिनिमम एफर्ट एंड एनर्जी. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज? Disadvantages are that these are often limited to producing energy only under certain circumstances, such as sunny days for the solar panels and windy days for the windmills. राइट. हमने अभी जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात की है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स इनको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते. सो कंटिन्यूसली और अराउंड द क्लॉक एनर्जी जनरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दीज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द सोलर पैनल्स, कि हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द सनी डेज. इफ द डे इज सनी, only then we can utilize solar energy. But if it's a cloudy day, definitely then we cannot use the solar light, because solar light is not available. इसी तरह से अगर हम wind mills को use करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे एक windy weather required है. But if it's not the windy day, then windmills are of no use. So that's why ये इनके disadvantages हैं कि they are not under the control of the human beings. हम इसको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते. हम सनी डेज को खुद से मैनेज नहीं कर सकते कि हम ये चाहें कि आज सनी डे है तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बींग्स. इसी तरह से ओशन थर्मल ग्रेडियंट है, ओशन की वेव्स हैं, उनकी स्पीड है, तो दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स. दैट इज अनप्रिडिक्टेबल. Right, so this is the disadvantages of the non-conventional energy sources. इसी तरह से geothermal energy है, तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन नॉट रेगुलेट, वी कैन नॉट कंट्रोल. तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से अभी तक इनको लार्ज स्केल पे एनर्जी जनरेशन के लिए इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका. देन डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज. अब कोई से भी रिसोर्सेज हैं, इनकी डिप्लीशन हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है. उसकी जो मेन रीजन है दैट इज ओवर ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की एनर्जी की डिमांड्स बढ़ रही हैं, और डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज की ओवर कंजम्पशन हो रही है. दैट इज लीडिंग टुवर्ड द डिप्लीशन ऑफ द environmental resources, and it should be avoided, it should be controlled. Otherwise it will be difficult for coming generations of human beings to survive. So that's why it's a serious issue. Resource depletion means exhaustion of the raw materials within a region. यानी एक specific locality है, उसको हम consider कर रहे हैं, तो वहाँ पे resources की exhaustion हो गई है, ख़त्म हो गए हैं, resources are not available there now. Overuse of the resources without replacement causes the depletion of resources. Now, what is the cause of the resource depletion? Man is the main cause of resource depletion, as I told you, because of the overpopulation of the human beings. Depletion is occurring.
overconsumption of resources, overpopulation, erosion of the land. Erosion means removal of the top fertile layer of the soil. This is called as erosion. Then pollution, either it is air pollution, wind pollution, water pollution or land pollution, contamination of the resources. All these negative impacts are caused by man on his environment, right? Or the main reason is कि number of human beings is increasing, human population is increasing, तो definitely उनका number increase होने की वजह से environment के ऊपर ये सब negative impacts हो रहे हैं. Human beings are causing deforestation, they are cutting trees to fulfill their requirement, urbanization हो रही है, industrialization हो रही है. So all these are the negative impacts of man on our environment. Protection of environmental resources is required. How we can protect our environmental resources? Natural resources are vital to our existence. Our health and well-being are closely linked to the quality of our air, water, soil, and biological resources. Definitely, we are dependent upon our environment. अगर हमारा environment अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, यहाँ पे resources abundantly available होंगे, हमारी requirement पूरी करने के लिए available होंगे, only then we can survive a better life, right? Otherwise, अगर हमारा environment disturb होगा and these resources are not available to us, definitely we will not be able to spend a good life. So that's why it is very, very necessary to protect our environmental resources. Our economy and key industrial sectors are directly and indirectly reliant on the functioning of the ecosystem. So everything related to the human beings, their economy, their social life, everything is dependent upon the environment and it is related with the ecosystem. So it should be well maintained, well regulated, well organized. Our environment and its natural resources should be protected from depletion. Now, what is the role of government? Governments are playing role in the conservation of the environment, in the protection of the environmental resources. Government control and develop forest, dams, irrigation systems, power stations, railways, port, roads, mines, and industries of the country. Important fields, all they are under the control of government. The Ministry of Environment is involved in checking about afforestation, reducing pollution and saving wildlife and other resources. तो गवर्नमेंट के अंडर एक मिनिस्ट्री होती है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, और इस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मिनिस्ट्री? दे आर इन्वॉल्व इन चेकिंग अबाउट द एफॉरेस्टेशन एंड टू कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करके ये एफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज, plantation of the forest. That is the duty of the Ministry of Environment. They should check upon this. Then reducing pollution, कि हमारे environment में pollution ज़्यादा ना फैले, ये उस चीज़ को regulate करते हैं, control करते हैं, and saving the wildlife, wild animals, wild plants, and other resources. To educate people every year, Earth Day on 22nd of April and tree plantation week are observed. तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ही ये इवेंट भी जो है वो किया जाता है, टू एजुकेट पीपल एवरी ईयर. हर साल लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए कि दे शुड प्रोटेक्ट देयर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, दे शुड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट. 22 ऑफ द अप्रैल को जो है लोगों को जो है ये एक स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसके अलावा प्लांटेशन वीक भी बनाया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जा सके टू प्लांट अ ट्री, राइट? ताकि वो अपने लिए प्लांटेशन करें ताकि अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए इन्वायरमेंट को सेफ बना सकें. सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अलोंग विद द गवर्नमेंट सम NGOs आर आल्सो वर्किंग. NGOs का भी बहुत important role है. These are the organizations which are serving in different fields for human beings. NGOs can play very important role in environmental protection by educating the people and giving awareness to them towards the environment. लोगों को ये awareness देती हैं, उनको educate करती हैं towards their environment. उनको environmental problems के बारे में awareness देती हैं कि these are the problems nowadays generated because of the human activities and how we should control them. They have made people aware of the environmental problems which are caused due to the neglect and uncontrolled exploitation of the natural resources. आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो लोगों के पास इतनी ज़्यादा awareness नहीं थी. They were just
doing their activities along with the environmental resources को ओवर कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन लोगों को इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो इसमें एनजीओज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों के माइंड को जो है सेट किया है इस तरफ, और उनको अवेयरनेस दी है, उनको एजुकेशन दी है कि दे शुड टेक केयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट, अदरवाइज there will be a huge problem for their coming generations. Some of the NGOs are working for environmental awareness while some are working in research field. As I told you कि NGOs different तरीके से human beings को serve कर रही हैं, different fields में काम कर रही हैं। तो कुछ NGOs जो हैं वो लोगों को के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस का काम कर रही हैं, लोगों को इसके बारे में वो बताती हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हैं, और फिर साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताती हैं कि यू शुड डू दीज थिंग्स। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, तो आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जबकि कुछ एनजीओज जो है वो रिसर्च फील्ड में भी काम कर रही हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट वे में स्मार्टली इनको यूज़ कर सकते हैं। So this is the role of the NGOs and that is all about our today's topic, जिसमें हमने environmental resources और इनकी depletion के बारे में बात की है। Hopefully आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। So thank you for watching.